Hello and a very good morning to all of you. Welcome to Science Arena. I am Monica. Solve with me में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में आज हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस. सो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज द सेम एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, total resistance of a circuit, net resistance in a circuit. So this is what we are going to find today for different types of circuits. So हमें पता क्या होना है before we can take that initiative of starting off with the first question for today. हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स होने चाहिए क्लियर. अगर क्लियर नहीं है तो करना क्या है, हमें पीछे वाले वीडियोस में जाइए, पता करिए सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं, एंड देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन एंड स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ये रहा हमारा पहला सर्किट जिसका निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब निकालना है नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट. सो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, स्टेप वाइज सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स मिलेंगे. इफ समवेयर डाउन द लाइन यू हैव गॉन रॉन्ग at the end of the entire working, at least the steps which you have drawn for the simplification of the equivalent circuit is going to fetch you marks. मतलब क्या है, अभी equivalent circuit इसका हम simplification के दौरान बनाते जाएंगे so that you get an idea of how to simplify your circuits. Now we have 2 points P and Q. So let us just draw 2 points P and Q. All right. Now between P and Q, if you look at, let us name these. This is R1, R2, R3, R4, and finally we have R5. Now R1 starts at P. It does not directly connect to Q. So it connects via R2 to Q. यानी कि R1 and R2 क्या हुए, सीरीज में हो गए. सीरीज में we are going to add up resistances. So एक हम बना लेते हैं between P and Q, R1 plus R2. So how much do I get? R1 plus R2 is going to fetch me a 10 ohm. Now look at another R5 between P and Q. So R5 directly starts from P and is connected to Q on the other end. So let us attach R5 between P and Q. This is R5, which is a 1 ohm resistance. All right. Now if you look at R4 and R3. So R4 starts at P and it is not directly connected to Q. It is connected to Q via R3. So R4 and R3 are holding hands to create a series connection here. So करना क्या है, दोनों के resistances को हम करेंगे add, यानी कि between P and Q we have another set of 2 resistances in series. So 4 plus 4 is going to give us 8 ohm. So this is 8 ohm. Now if you look at these 3 sets, that means R1 plus R2, R5 and R3 plus R4, they are very clearly in parallel. तो करना क्या है, अब तीनों P से स्टार्ट हो रहे हैं एंड Q पे एंड हो रहे हैं, all 3. So they are resistances in parallel. So what do? We will find out the resistance, the total resistance of this parallel circuit. How do we do that? So 1 by Rp, where Rp is the total resistance of this parallel circuit, is equal to, अब इनके values को हमें you add the reciprocals of these, right? So 1 by 10 plus 1 by 1 plus 1 by 8. LCM कितनी आ गई हमारी 40. 10 4s are 8, 5s are, so how much do I get? A 49 by 40 ohm. So what is the value of Rp? 1 by Rp is 49 by 40. So Rp is 40 by 49 ohm. हो गया जी पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बड़े आराम से निकल गया हमारा. अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर. टेक अ लुक एट दिस सर्किट नाउ. Here we have 2 terminals A and B. So A and B बना लेते हैं. This is A and here we have a B. Now between A and B we have R1, which is a 3 ohm. So this is our 3 ohm resistance. Now if you look at R4, R4 starts from A, moves through R3 and R2, then connects to B. इसका मतलब क्या हुआ, that none of
the R2, R3 and R4 have the same start or the end point. They are all holding hands to connect between A and B. इसका मतलब है तीनों आपस में सीरीज में हैं. सो क्या हुआ, अगर तीन रेजिस्टेंसेज R1 I mean R2, R3 and R4 are in series, that means I am going to add up R2, R3 and R4 to get a value of 4 plus 2 plus 6. So 10 and 2 12 ohm. Correct? Now these two resistance sets, that means 3 ohm and 12 ohm, they have the same start point A, same end point B. Now that means that these are in parallel with each other. So करना क्या है, 1 by Rp is equal to 1 by 3 plus 1 by 12. So I get an LCM of 12, 3 4s are, 12 1s are, so 5 by 12. So what is my Rp? Rp is 12 by 5 ohm. So ये भी हमने सर्किट बड़े आराम से सॉल्व कर लिया. अब इस कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले सर्किट को हम करेंगे चुटकियों में सॉल्व. सो स्टार्ट करें. पहला स्टेप सिंप्लीफाई करना है हमें, राइट. अब द गुड पार्ट अबाउट दिस सर्किट इज इसमें सारे रेजिस्टेंसेस 2 ohms हैं, राइट. सो इट इज गोइंग टू सिंप्लीफाई आवर टास्क. लेट अस सी हाउ. सो अगर आप देखें बिटवीन ए एंड पी, so between A and P you have R1 and R2 which have the same start point A and they have the same end point P. That means R1 and R2 are in parallel. अगर R1 and R2 parallel में है, इसका मतलब कैसे निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. 1 by Rp is 1 by 2 plus 1 by 2 which is 2 by 2 and I get a value equal to 1 ohm. So Rp की वैल्यू तो 1 ohm आ गई. So the very fact that this is 1 ohm, ये भी 1 ohm होगा because R3 and R4 के भी start point is the same. That means they share the same start point P, they share the same end point B. So naturally R3 and R4 are in parallel. इनकी भी value of resistance 1 ohm आएगी. Now if you look at these two, I am talking about R5 and R6 which have the same start point B and the same end point Q. इनकी भी resistance 1 ohm. And similarly R7 and R8 are also going to have an equivalent resistance of 1 ohm. So ये तो हमारा बड़ा simplified circuit मिलने वाला है. So if you look at this, so what is this point? This is A. What is this point? It is P. And between A and P we have a 1 ohm. ये अभी हमने निकाला है, right? So this is a 1 ohm resistance and let us call it as W. Now if you look at between P and Q, again you have a 1 ohm resistance, X equals, and between, what do we have this as? Q. Alright, so we have Y as also equal to 1 ohm, and finally between A and Q we have Z again equal to 1 ohm. Now we have a very simplified circuit which we can solve in no time. So let us begin. Now A, this was supposed to be B. Alright, now between A and B you have W and X holding hands to connect between the 2 points. यानी कि ये W and X आपस में सीरीज में हैं. And what about Z and Y? So Z and Y again are in series because the start point of Z does not directly connect to B. So the end point of Z connects via Y to B. यानी कि दोनों Y and Z are in series. So what do we have between A and B? So between A and B we have two resistances, which sets of two resistances which were in series. So 1 plus 1 is a 2 ohm, and again between A and B we have Z and Y again in series and they add up to 2 ohm. अब ये दोनों resistances, they have the same start point A, they have the same end point B, यानी कि ये आपस में parallel में है. So 1 by Rp is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 which is a 2 by 2. That means I get Rp equals 1 ohm. So जितना complicated दिख रहा था ये तो बिल्कुल simple निकला,
राइट. सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ना तो डिफिकल्ट दिख रहा है और ना डिफिकल्ट है, सो इसे तो हम बड़े आराम से करने वाले हैं. नाउ लुक एट द टू टर्मिनल्स ए एंड बी. सो R1 इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B. तो पहले बना लेते हैं हम A एंड B. सो दिस इज A एंड B and R1 is connected between A and B. So here we draw our R1. All right, and it is having a value of 30 ohm. Now look at R2, which starts from A and via P, via R3 it connects to B. It does not directly connect between A and B. I am talking about R2 not connecting directly between A and B. And similarly R3 does not connect between A and B directly. So R2 and R3 are holding hands to connect between A and B. So they are in series. So between A and B हमने क्या बनाया, एक और रेजिस्टेंस सेट बनाया, and that was adding up to a 30 plus 30 which is a 60 ohm. Now what we have is a very simplified circuit. Let us call this as R4. Now R1 and R4 are very clearly in parallel. दोनों के start points A हैं and दोनों का end point B है. So 1 by RP is equal to 1 by 60 plus 1 by 30. How much do I have here as my LCM? 60. So 130 2s are, so 3 by 60. That means 1 by RP is a 1 by 20 ohm, implying that RP is a 20 ohm. भाई ये तो सुपर फास्ट हो गया. सो अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. इफ यू लुक एट दिस सर्किट, सो द पॉजिटिव टर्मिनल इज A, द नेगेटिव टर्मिनल इज B. नाउ फ्रॉम A you have R1 connecting to A. And what about the other end of R1? It connects to R2. What about the other end of R2? R2 connects with the start point of R3. And what about the end point of R3? So R3 का end point then goes and connects to B. So R1, R2, R3, they have different start point and end point. So they are all holding hands to connect between A and B. So what is the end result? What do we conclude? They are all in series. So इस question में तो कुछ है ही नहीं. So my equivalent resistance for this circuit, so my R total is how much? If they are all in series, I just need to add them up and I get a value of 16 plus 3 is a 19 ohm. हो गया. Now here is a circuit which will require a little of simplification. So let us see क्या simplification की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे. Now if you look at this 3 ohm and 6 ohm resistances, now they are very clearly starting from the same point and ending at the same point C. That means these R1 and R2 are in parallel. So इसका equivalent resistance निकाल लेते हैं. So 1 by RP is equal to 1 by 3 plus 1 by 6. And what do I have? 3 2s are, 6 1s are, a 3 by 6 means a 1 by 2. So RP is a 2 ohm. So I can replace this part with a 2 ohm resistance. So कैसा circuit दिखने वाला है मेरा? Alright. So my circuit can be simplified to, starting with A, I have between A and C a 2 ohm resistance. Now what between C and D? अभी इसे touch नहीं करेंगे हम. So my 18 ohm lies between C and D, and beyond D, between D and B, we have a 6 ohm. Now from A, I have the 5 ohm. I am not disturbing the rest of the circuits. Alright, so this is point D. Now, what about this part? How do I simplify this part? If you look at this, 2 and 18. So 2 and 18 are connecting between A and D. तो इसे तो मैं बहुत आराम से replace कर सकती हूँ. They are two resistances in series. So 18 plus 2 is a 20. So in the next step between A and C does not
basically does not contribute in any other way other than the fact that 2 and 18 are in series. इसे हमें सिर्फ add up करना पड़ेगा. So this is a 20 ohm. So I've added up 2 and 18 between A and D. What else do I have between A and D? The 5 ohm resistance remains as it is, and we still have our 6 ohm in place. This was supposed to be B here. Now what is our next step going to be? अब ये तो बड़ा clearly this is going to be in parallel. Start point दोनों का A है and end point दोनों का D है. So 1 by 20. So let me call this as 1 by Rp dash is 1 by 20 plus 1 by 5. So how much do I have? My LCM being 20, 5 fours are, so 5 by 20. So 1 by 4 is 1 by Rp dash. So what is Rp dash going to be? A 4 ohm. So this part shall be replaced by a 4 ohm. So how does my circuit look? So between A and D, I have an equivalent resistance value of 4 ohm. Now this is going to be the Rp dash part. Alright. So this is A and this is D. And D and B के बीच में अभी भी हमारा 6 ohm बना हुआ है. अब ये दोनों सीरीज में है. So करना क्या है? To get the equivalent value, we just need to add them up. So my R total, let me use the space. So my R total is going to be equal to 6 plus 4, which is a 10 ohm. So it did require quite a number of equivalent circuits which I needed to draw before I could come to the conclusion of the equivalent resistance value. I hope you have understood how we have progressed doing and simplifying every step as we have worked through the question, right? So अगर हमारा लास्ट पार्ट किसी वजह से गलत भी हो गया, so at least मुझे स्टेप्स के मार्क्स ज़रूर मिलने वाले हैं. Now for this question there is a piece of advice. So advice ये है कि कभी भी सर्किट को इस ओपन एंड से सिंप्लीफाई नहीं करना है. You have to start to simplify your circuit from this closed end. Alright, so let us see how. So if you look at the terminals P and S, P and S के बीच में, so here I have between P and S, I have R4. A and B are not going to be disturbed in any manner. So I will keep this part of the circuit as it is. अब आ जाते हैं इस 30 ohm पे. So the 30 ohm starts from P and then R2 connects with the start point of R3. R3 का end point then connects to S. So between P and S, R2 and R3 are holding hands to connect between P and S. So that means R2 and R3 are in series. So करना क्या है? अब इसके बीच में दोनों को हम ऐड कर देंगे. So R2 plus R3 gives me a value of a 35 ohm. So पहला equivalent circuit हमारा ऐसा दिख रहा है. R4 has a value of 15 ohm and R1 being 20 ohm. Now how do we simplify it further? अगर 15 ohm and 35 ohm को देखें, so the two resistances have the same start point P and the same end point S. That means 15 and 35 ohm are in parallel. So how do we find the equivalent resistance for this part of the circuit? So 1 by Rp is equal to 1 by 15 plus 1 by 35. My LCM is a 105. 15 sevens are, 35 threes are. So this is a 10 by 105. So a 2 by 21. So my Rp is 21 by 2 ohm, which is a 10.5 ohm. So I can replace this part of the circuit by a 10.5 ohm. So करना क्या है? A अभी untouched है मेरा. All right. So A
I have R1 between A and P. This is a 20 ohm. Now what about this part being replaced? It's a 10.5 ohm. So ये पार्ट हमने सिंप्लीफाई करके हटा दिया सर्किट से. अब हमारा सुपर सिंप्लीफाइड सर्किट मिल गया है, राइट. अब क्या करना है? अब यहाँ तो चीज़ें बहुत क्लियर है, इन दोनों को ऐड कर देना है बिकॉज दीज टू रेजिस्टेंसेज आर नाउ इन सीरीज. सो व्हाट इज माय आर टोटल लुकिंग लाइक? सो माय आर टोटल इज 20 plus a 10.5 which is a 30.5 ohm हो गया जी, राइट. सो ये भी सर्किट अब हमने कर लिया है सॉल्व. अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. सो लेट अस स्टार्ट सिंप्लीफाइंग दिस सीमिंगली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. सो जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे. बट इस सर्किट में कुछ बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जो हम बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो लेट अस लुक एट दिस पार्ट. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट R1 एंड R2. दे हैव द सेम एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड द सेम एंड पॉइंट. सो ये पार्ट पैरेलल में है. सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस पार्ट, सो बिटवीन H एंड GH शॉर्टेड है, मीन्स एक सिंगल पॉइंट है ये. सो दैट मीन्स आई हैव R6 एंड R5 ऑल्सो इन पैरेलल. तो इससे पहले सिंप्लीफाई करके हटा लेते हैं. ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन सिंप्लीफाइंग. सो स्टार्टिंग विथ पॉइंट A, I have, how do I replace this part? So 1 by RP is going to give me 1 by 6 plus 1 by 3, which is a 3 by 6 means half. So RP की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 2 ohm. So this is the same as 2 ohm. So इसे हम replace कर लेते हैं. All right. So between A and C I have a 2 ohm. Now मूविंग ऑन टू बाकी सर्किट डिस्टर्ब नहीं करेंगे. सो बिटवीन C एंड D आई हैव अ 2 ohm एंड ये R4 है हमारा 6 ohm. इफ आई हैव अ 4 ohm हियर, आई विल नॉट डिस्टर्ब दिस. नाउ रिप्लेस दिस पार्ट अगेन. सो 1 by 8 plus 1 by 8. So I have, all right, 1 by RP dash is 1 by 8 plus 1 by 8, which is a 2 by 8. That means a 1 by 4. So RP dash की वैल्यू आ गई 4 ohm. So this is the same as 4 ohm. So इसे हम replace कर देते हैं with a 4 ohm resistance. So यहाँ पे between H and the GH part you have a 4 ohm. अब हमारा सर्किट बहुत ही सिंप्लीफाइड दिख रहा है. पहले के कंपैरिजन में द क्लटर हैज बीन डन अवे विथ. नाउ स्टार्ट सिंप्लीफाइंग फ्रॉम द क्लोज्ड एंड. ऑल राइट, सो यहाँ सिंप्लीफिकेशन हम क्या करेंगे? नाउ लुक एट द पॉइंट बिटवीन, लेट अस कॉल दिस एज x. सो G एंड H को टुगेदर मैंने x बना दिया है. नाउ इफ यू लुक एट दिस पार्ट बिटवीन C एंड X, so these two resistances 2 ohm and 6 ohm, they are holding hands to connect between C and X. so क्या करना है? so इसे हम replace कर देते हैं with a 6 plus 2, that means a 8 ohm. बाकी सर्किट छूना नहीं है. now इन दोनों को अगर आप देखें, the 4 ohm and the 4 ohm, they very clearly are in series. so 4 plus 4 इसको भी हमने simplify कर दिया and 6 plus 2 इसे भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया. सो दिस इज गोइंग टू बी अ 8 ohm. सो दिस इज C एंड दिस इज X. नाउ व्हाट डू आई हैव बिटवीन C एंड X? ये दोनों 8 ohms पैरेलल में हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पैरेलल सर्किट आई गेट? आई विल गेट इट द सेम एज द 4 ohm. वाई सो? बिकॉज यहाँ भी हमने 1 by 8 plus 1 by 8 ही करना होगा. सो आई कैन रिप्लेस दिस पार्ट बाय अ सिंगल 4 ohm resistance. so इसे हम replace करने वाले हैं. so how does this look like? so I have ये 2 ohm resistance as it is, and between C and X I have now got a 4 ohm resistance. correct? अब ये 2 and 4 सीरीज में होने वाले हैं.
सो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? सो माई आर टोटल नाउ इज गोइंग टू बी 4 + 2 विच इज 6 ओम। सो इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने कर लिया है क्रैक। सिंप्लीफाई करके एक बहुत छोटा सा प्यारा सा वैल्यू आ गया है 6 ओम रेजिस्टेंस का। सो अगर आपको आज की क्लास में मज़ा आया हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड प्लीज़ रिमेंबर टू स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।